Every child has the right to a safe, formal quality education and access to lifelong learning. However, due to combination of factors, many girls are forced to leave school, while others never have the opportunity to go in the first. As the saying goes, if you educate a man, you educate an individual, and if you educate a woman, you educate a family. Nearly 22.5 million children are out of school. Girls are particularly affected. 32% of primary school age girls are out of school in Pakistan, compared to 21% of boys. There are 132 million girls out of school in the world. About 9.2%, 12.2 million are in Pakistan. Lack of access to education for girls is part of a broader landscape of gender inequity in Pakistan. Girls' education remains a significant challenge, with lower enrollment rates and higher dropout rates for girls, particularly at the transition from primary to secondary school. The poorest rural girls are most affected. Pakistan has stated its intention to promote education and literacy in the country, but economic constraints are a major hindrance. The government cannot reform Pakistan's education system on its own. This is where the private sector, in the form of non-government organizations, NGOs, comes in. Bunyad is an NGO working for the promotion of literacy and education, especially of young girls and adolescents living in rural areas. The schools of Ahmadpur East are in a semi-desert area. They're very far away from the main roads. And the village people are left to their own wits. They have not seen learning. Most mothers are illiterates, if not all. Fathers have very little learning. The boys are very mobile in our culture. They can move around. But girls, it was a big no. Bunyad Foundation, in collaboration with UNESCO, Koika, and the Punjab government, has set goals to increase girls' enrollment and retention in primary schools in marginalized communities of Punjab's district, Bahawalpur. When we signed up with UNESCO, that is middle of last year, May, the construction goods were very below, they were average price, and it was easy to do it in that money. But when we came to actually implement it a year later, the prices had shot up fourfold, and it was very difficult to do it on that money. But the communities chipped in with their labor, the parents chipped in with their effort, and we were able, in the same price a year ago, to make 110 schools were made to improve their images and their toilets and their rooms. The goal was set to enroll 1,500 out-of-school girls in the 110 project schools. These schools are situated in the 16 union councils of Tehsil Ahmadpur East, District Bahawalpur. इस पूरे 110 स्कूलों में हमने 2400 मतलब यूथ को, मदर को, फादर को इन्वॉल्व किया और उसके थ्रू हमने मिसिंग फैसिलिटीज़ निकाली। बेसिकली हम चाह रहे थे कि हम गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें और गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट स्कूलों को इम्प्रूव करें। पहले 40-50 बच्चा था, और जैसे ये बुनियाद वाले आए तो हमारे पास अब बच्चे 110-15 बच्चे हो गए। अब फिर जो है ना, हमें ये कमरा बनवा के दिया, इनकी मेहरबानी है। 2 दरवाजे लगे हुए हैं, हवादार कमरा है, बच्चे खुश हो के पढ़ते हैं और खुशी खुशी आते हैं और खुशी खुशी जाते हैं। एक कमरा भी चले सही, एक वाशरूम भी चले बाले वास्ते, बहु अहमियत कितने सारे नाल दामन कितने। It was not easy because to take the supplies to 110 schools far away where there were roads broken and there were places where there were no roads, it was very difficult. But the cause of Bunyad and the cause of UNESCO is the same. We must get the girl child. The female education is the most important thing to chase away poverty and live in apathy. The BLCC team met with CEO Education,
DOs and AOs of the project area to discuss strategies for implementing the task outlined in the MCS approach. कोयिका बुनियाद फाउंडेशन एंड यूनेस्को के साथ हम 1 साल से मतलब वर्किंग रिलेशनशिप हमारा चल रहा है। ये बड़ा बेस्ट रहा है हमारा रिलेशनशिप। गर्ल्स एजुकेशन पे ये लोग वर्क करते रहे हैं। इनकी बड़ी सपोर्ट मिली मेरे स्कूलों को, मेरी पूरी तहसील को, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस होता है वो गर्ल्स एजुकेशन की इनरोलमेंट है। To meet the objectives, multi-pronged cost-effective solutions approach was used. Number 1. Social mobilization campaign. Number 2. Conduct quick rapid baseline assessment. Number 3. Capacity building of teachers and training programs. Number 4. Strengthen community-based school management system. Number 5. Customized, simplified education based on Bloom taxonomy and outcome-based education. BLCC was successful in enrolling 1,500 out-of-school girls in the 110 project school, Tehsil Ahmadpur East, Bahawalpur. यहाँ पर ना बच्चों को 5 के बाद बिल्कुल भी मतलब पढ़ने की परमिशन नहीं देते, क्योंकि दूर दराज इलाके हैं, डिस्टेंस की वजह से भेजा नहीं जाता बच्चों को। मैं पहले 4 क्लास में पढ़ती थी। मेरे बस्ती वालों ने, मेरे घर वालों को कायल किया वो पढ़ाई छुड़वा दें इसकी, वो बड़ी हो चुकी है, इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। स्कूल आने से पहले गंदम काटती थी और कपास चुनती थी। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था, लेकिन मुझे पढ़ने नहीं देते थे, इसलिए मैंने कितने साल घर पर यही काम किए हैं। फिर बुनियाद फाउंडेशन टीम आई, मिस ने उनसे बात की, फिर मिस और बुनियाद फाउंडेशन हमारे घर पर आए, हमारे फैमिली वालों और हमारे बस्ती वालों को कायल किया। मेरे बाप ने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगा। मैंने दिल लगा कर मेहनत की और मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। मेरे इलाके वाले मेरे घर आते हैं, कोई मैसेज लेकर आते हैं, कोई दवाइयों की डेट, कोई फ़ोन नंबर, कुछ भी बढ़वाना हो तो मुझसे बढ़वाते हैं, और वो भी बहुत खुश होते हैं कि हमारे बस्ती में कोई लड़की पढ़ी हुई है। मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की हूँ जो बुनियाद फाउंडेशन की वजह से 5 पास कर चुकी हूँ। ऐसे 7 पीढ़ियाँ सारी बस्ती है ना जरी ये अनपढ़ है वे जहले थे पूरे यही आलमी इदारे वाले आए नहीं ने साकू स्कूल निवारी थे स्कूल सारा खोल के और बाल सारे कोई शहूर है चागे। इनरोलमेंट कैंपेन हमने 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की, उसमें हमने 12 वॉक्स करनी थी, हमने 18 वॉक्स की। हमने तकरीबन कोई 2800 लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया इनरोलमेंट वॉक्स में, और उनको यही मैसेज दिया हमारी बेटी भी, हमारी माँ भी, हमारी बहन भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। मैंने डोर टू डोर विज़िट किया, मैंने इनरोलमेंट अपनी बढ़ाई, और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और तादाद भी हमारी अच्छी हो चुकी है इस टाइम। हमारे इलाके की जो है ना एक बच्ची शैरिश मुनीर जो कि पहले नहीं पढ़ रही थी, हम उसे घर जाके लेके आए हैं स्कूल में, और उसने यहाँ आके पहली पोजीशन हासिल की, जबकि उसके पास नोट बुक्स भी नहीं थी। सिर्फ उसने कॉपियों के ऊपर नोट करके अपने पेपरों पे मेहनत की है और उसने फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया है। मैंने इतनी मेहनत की है कि मैं 2 क्लास में से फर्स्ट पोजीशन लेके 3 क्लास में आई हूँ। थैंक यू बुनियाद फाउंडेशन, कोयिका एंड यूनेस्को। 110 स्कूलों से 230 टीचर्स की मल्टी ग्रेड टीचिंग पर ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि इस बेस पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है हमारी तहसील अहमदपुर शर्किया में। और मैं तहे दिल से यूनेस्को, बुनियाद और कोयिका जो है ना, इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इनके ताउन से हमारे स्कूल सिस्टम जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत इम्प्रूव हुआ है और हमारा सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। और जिस तरह ब्रेस्ट का और जिस तरह किचन गार्डनिंग का उन्होंने प्रोजेक्ट किया, तो वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको किया। हमने उगाई भी सही, बच्चियों को भी अवेयर किया। जैसे सब्जियां हम लोगों ने उगाई, कद्दू की थी, टमाटर हम लोगों ने लगाए, प्याज लगाए हमने, लहसुन लगाया हमने, और उन्होंने बहुत इंजॉय किया। 110 स्कूलों में इनका टारगेट 3000 पौधे लगाने का है, जिसमें से ये 70% से ज़्यादा इन्होंने अचीव कर लिया हुआ है। उम्मीद है कि 100% हो जाएगा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। Over 50,000 people benefited from the achievement of these goals. 10 हमने नॉन फार्मल सेंटर बनाए थे जिसमें 400 बच्चियों को हमने इनरोल किया, और उनका मकसद भी यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है, अहमदपुर ईस्ट में लिटरेसी रेट बहुत कम था, तो हम उसको अचीव कर सके। पहले जो बच्चियां थी वो कपास चुनती, घर का काम करती,
और अब वही बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं और मुझे लगता है कि इन्हीं बच्चियों में से कोई आगे जाके बहुत बड़े मकाम पे जाएगी। Bunyad Literacy and Community Council will continue to collaborate with 110 schools to enroll out-of-school girls and ensure a minimum retention rate of 80% of already enrolled children in the targeted 16 union councils of Tehsil Ahmadpur East, District Bahawalpur, Pakistan. So UNESCO, thank you. No matter what the challenge, Bunyad was able to handle it. Thank you.